सेशा चौधरी और मैं 6 years old की हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं तबला बजाती हूँ। Hi, I'm Anamika Chowdhury. So I'm mother of Sayesha Chowdhury. To be very honest, she is lovable to all of us, and she is the only one whom whom we try to give all our love and serenity and whatever. When Sayesha born, I always feel like taking her through the Indian classical things all the time. Given it's something which is extinguishing from our India, and whatever is there, we are acknowledging the fact that things are dramatized in Western world more rather than in India. And that's why I was mainly trying to build her up since her childhood through the Indian tradition. We, her grandparents, we always try to nudge her through those things so that she can learn and unlearn things which will deliver the best to her. She has that capability to understand the rhythmic knowledge since her childhood, say from the age of 6 months itself. We even have the video evidencing the same. When she was on her dadu's lap and she was playing dha 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 on the tabla, and it was the absolute nascent moment for us, because it was just the moment when she had her hands on tabla and she was playing dha 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 rhythmically. मेरा पोती जब ये 5-6 महीना की थी, 6 months की थी, तो मैं तो प्रैक्टिस करता था। वो मेरे गोद में बैठे तो मैं उसको तबले में वो हाथ रखा। मेरी मिसेस ने वो हमेशा फ़ोटो लेती थी तो उसने फ़ोटो लिया। तो जैसे जैसे हाथ रख के उसको भी कुछ लगा कि ये भी कुछ चीज़ है, कुछ खेलने का, बजाने का, कि उसके अंदर तो रिदम था। तो उसने जैसे हाथ रखा, वो फ़ोटो लिया, मैं फ़ोटो देखा, अरे इसका तो फ़ोटो लिया, हाथ लग रहा है जैसे कोई तबला बजाने वाले हाथ है। जैसे उस्ताद लोग रखते हैं ना, हाथ रखने का भी एक तरीका है। ऐसे नहीं किसी ने ऐसे रख दिया, लेकिन प्रॉपर सेटिंग में। उसका फ़ोटो में देखता रहा हूँ, ये तो हाथ रखा, देखो पूरा उस्ताद जैसे लग रहा है। मैं कुछ म्यूज़िक का बीट्स दे दिया, वो शुरू कर दिया, वो साथ बीट शुरू कर दिया। तो छोटी दे उसको, तभी उसके अंदर बीट था, ये तो कर सकती है। मुझे तबला सिखाते हैं दादाजी, बहुत अच्छा सिखाते हैं। मुझे दादाजी के साथ बजाना बहुत अच्छा लगता है। मैं नए चीज़ें सिखाते हैं, पुराने चीज़ें प्रैक्टिस कराते हैं, नगमा के साथ कराते, वो सब मुझे अच्छा लगता है। बहुत जल्दी उसका जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत अच्छा है। एक बार सुन के, 2 बार सुन के बजा लेती, तो धीरे धीरे उसको तालीम देना शुरू किया। तो उसको हमने काफ़ी उसको एनकरेज करते थे, और स्कूल का प्रोग्राम में, क्रिसमस के प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में उसको मैं ऑनलाइन में डाल देता था, बैठ जाते थे तो बजा लेता था। ये जो टैलेंट है तबला का, इनबॉर्न टैलेंट होता है। ये टैलेंट होना चाहिए, मतलब रिदम अंदर ही होता है। ऐसे नहीं कि सिखाने की बात है रिदम आए, लेकिन उसको रिदम अंदर ही है। तो जो भी चीज़ सिखाता हूँ, 1 बार 2 बार बजा लेती है। तो जो भी चीज़ सिखाता हूँ, मैं मेरा सीनियर स्टूडेंट को सिखाता हूँ, वो सुन के बजा लेती है। मेरे लाइफ में ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला मुझे, टैलेंटेड स्टूडेंट मिला, बट शी इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं तबला मेरे दादाजी से सीखती हूँ। मुझे तबला बजाना बहुत अच्छा लगता है।
मुझे सब कुछ अच्छा लगता है तबले में, जैसे कायदा, पेशकार, टुकड़ा, रेला और फरमाइशी। ये सब कायदा होता है, जैसे धाते ट दादा, फिर धन धाग धा, फिर धातर तक धड़ धड़ गड़ धक, धग तड़े, फिर गिनतर तक ताक के धन, ये सब होता है। मैं जब तबला बजाती तो मेरा हाथ नहीं दुखता, मुझे पता नहीं मैं इतना फास्ट कैसे बजाती हूँ। Then we understood, no, she has some eternal power which is, which can make her sense the rhythms of tabla beats, and absolutely not only about tabla but also on some western percussions also. By the age of 1.5, I'm Nidhi Sirohi, the principal of GT Goenka Global School, Noida. Sayesha is a wonderful little child, very bubbly, and I think children of today should be. She personifies that. Sayesha, I think, is a prodigy for the simple reason that tabla is something usually played by boys or men. We will rarely find girl tabla players. And I also, like they say, ki great people don't do different things, they do things differently. So Sayesha is already doing it. She's doing something very different, which is otherwise accepted as male-dominated arena. she started playing tabla with Dadu. Yes, of course, it was a very initial stage for any child, but she started learning since that age. As we have an academy named Sangeetika Music Society. So its tagline is Ethos of Delhi Gharana. When I learned about Delhi Gharana after my marriage, and when I got to know that this form of art is extinguishing, given my father is the only living legend on this form of art, and he is the senior most disciple of Ustad Chama Khan Sarb and Ustad Nathu Khan Sarb. I am in this field for the last 4 decades. I started my tabla playing at the age of 10. So I got the talim at my home in very childhood. In my school life, I learned vocal, I used to play flute. Then finally I took tabla as my subject and as my ultimate destination. So I always tried my daughter to learn from her Dadaji so that she also can maintain this legacy forward and can bring this form of art into the next level, given Delhi Gharana is one of a tabla style which is extinguishing so far. If we will not put this forward to the other younger generation, I think we will eventually lose this form of art in the coming years. न्यू जनरेशन जो है ये वेस्टर्न म्यूजिक में ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि ये वेस्टर्न म्यूजिक में एक रीज़न बताऊँ इसमें, वेस्टर्न म्यूजिक वो बहुत जल्दी आप पिकअप भी कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा साधना की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारा इंडियन म्यूजिक है, एक वोकल का आप स्वर वो करने के लिए कितनी साल लगेंगे, और तबला का जो एक ता निकल बजाने में कम से कम 20 साल में जाके वो मैच्योर होता है। अब मैं बता रहा हूँ, इसलिए ये लोग वेस्टर्न कल्चर जल्दी पकड़ते हैं कि उसमें इतना हार्ड वर्क नहीं है। जैसे हमारा गाने में और तबले में जो बाकी चीज़ों में है, तबला ऐसे लगता है ड्रम से या दो बजा लेंगे, क्या है ये तो उंगली से बजाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक एक बोल निकालने में, एक एक चीज़ बजाने में बहुत साल लगता है। तो आजकल का जो जनरेशन है ये लोग चाहता है कि जल्दी कुछ कर ले, भाई साल 2 साल 5 साल सीख के मैं एक आर्टिस्ट भी बन जाऊँ, एक लाइवलीहुड भी हो जाएगा। लेकिन ये हमारा इंडियन म्यूज़िक इतना इजी नहीं है, ये साधना की ज़रूरत है। इसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल अच्छे म्यूजिशियन बनना तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। उसमें इतना हार्ड वर्क नहीं है। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक है, आजकल का बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं, इसमें इतना वो नहीं है, इसलिए वो एडॉप्ट कर लेते हैं।
मैं जहाँ तक समझता हूँ हम सबको जो आजकल का जनरेशन है उनको समझाना चाहिए, और हम खुद भी आजकल का बच्चों को हम ऐसे ऐसे रास्ता दिखाते, ऐसे चीज़ सिखाते, ऐसे उनको अपॉर्चुनिटी देते कि उसको इंटरेस्ट आए और सीखे, आगे करे। ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम गुरु का बच्चों को एक मार्गदर्शन देना चाहिए। भाई ठीक है, वेस्टर्न सुन लो और म्यूज़िक कहीं का भी सुन लो, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक। As a mother, and I can say as someone who knows music, it is absolutely an amazing thing to see and analyze or realize the thing that how she has that rhythmic sense, because she can understand the distuned sound, or you can say the very niche of tabla tunes, and even if she is listening to some of the western cartoon music, she can realize that mama tabla is playing in the background and this is the tal which is playing in the background. Even if we ask her like what's dadra, what's keherba, what's chaptal, she will be able to say that very smoothly. I absolutely feel proud when I see that her music sense is absolutely different from all other kids, because there is some inbuilt capacity which she has, because it's a very initial stage when she is learning these sort of things, and we also learned music, but I think it's something which is very amazing and unique into her. मैं कभी कभी ऐसे फील करता हूँ जो मेरा लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन और मेरा साधना, ये साधना के बाद ही मुझे शायद ऐसे पोथी मिला जो मेरा काम को आगे ले जा सकती है। बहुत प्राउड भी करता हूँ, लेकिन कभी सोचता हूँ नहीं अभी कुछ नहीं है, अभी तो तुमको सीखना है, करना है, ये तो जस्ट अभी एक शो प्रोग्राम हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये साल 2 साल उसके बाद ये सब भूल जाएंगे लोग। लेकिन मेन चीज़ तुमको सीखना है, अभी भी बोलता हूँ तुमको उसको तो तालीम देना है, ये तो ऐसे चल रहा है। ये इसका मेरा जो पोतिका ये सब देख के मुझे लगता है कभी खुश होता है, लेकिन कभी मैं खुद ही बोलता हूँ कि नहीं, ये तो उसके खुश होने के बाद वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है फिर मेरा, उसको ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा उसके साथ बैठना होगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, क्यों उसको करना आता है, उसका पॉपुलैरिटी हो रहा है, लोग सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे कराना पड़ रहा है। लेकिन तुमको शुरू से एक सिस्टमेटिक एक चीज़ सीखना है, वो तुमको मैं सिखाऊंगा, उसी तरह करो, वही तालीम दे रहा हूँ। फॉर्मल ट्रेनिंग जो है, गुरु शिष्य परंपरा वाला ट्रेनिंग, और उम्मीद है वो आगे लेके जाएगी मेरा लेगेसी। मुझे बड़े होकर एक तबला मास्टर बनना है, मुझे दादाजी के जैसे सब लोगों को टीच करना है। मैं इंडिया के बाहर तबला बजानी चाहती हूँ, मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं, मुझे सिर्फ तबला मास्टर बनना है। Always try to impart our traditional culture or cultural music, the Indian classical music, under Guru Shishya Parampara. Whenever I take forward any of my classes through social media platform, the only tagline which I use is Guru Shishya Parampara, because I absolutely believe in that term, and it's not something which we just write for the sake of writing, but we absolutely bows down to this fact, and we respect this Guru Shishya Parampara as well. I must say she is very clever, because she knows the nuances, what will make me angry, what will make me love, and she always tries to do things which makes me feel love to her. And honestly, whenever she goes out or do any of those sort of things which can make me feel angry,
She always have excuse in her head saying, you know, no mama, I was trying to do this and it happened, I was trying to do that and it happens that way and such things. She is very lovable, honest. Of course, a child is a very innocent at their, you know, nascent age. So even when Sayesha sits with her guru, come mentor, her Dadaji, she always takes the classes as like Shishya, and dad is always, you know, imparting the classes as her guru. Because if we will not respect this culture, I think we will be lagging behind, because our culture is not something which is westernized, but we believe in the concept of Guru and Shishya, because Guru is someone who will show the path of enlightenment to the students, and that's why this legacy is needed to be imparted as like Guru and Shishya. Sayesha is absolutely following this. We can do as a parent for her. So we try our level best to, you know, entertain her, encourage her for knowledge building, for any sort of those things. We always try to be there as a helping hand to her. Honestly, she is more into her grandfather and grandmother rather than us, because most of the time she is with them as well. Because I have left her all along with her grandfather and grandmother, and I think they know her the most apart from me, and her grandmother is the other mother, you can say, for her. दादा दादी से बहुत प्यार है, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मुझे रोना आ जाती है। बहुत अच्छी है, बहुत प्यार है दादा दादी से। And she is very much close to both of them. She feels absolutely confident whenever she is with them. Even you will feel amazed when I will say that, you know, even on her summer vacation, we stay at home, but she goes for vacating outside with her grandparents itself. So she is absolutely comfortable with them. मुझे सब कोई बहुत प्यार करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरी दादी और मम्मी करती हैं। सुबह करती हूँ दादाजी को और शाम को दादी और मम्मी, सब मेरे फेवरेट हैं। So my advice to all the parents will be that understand your child's potential. Nothing can be done forcefully. But yes, if we can nurture the seed as it is needed to be nurtured, I think they will be able to achieve the best potential which they have. And they will not feel chaotic about this, and they will not feel this as forced on them. And it's absolutely needed for them to understand their potential and nurture it the way they want it to be. She is like any other kids of her age, but she is just different in the sense of rhythm. समझौता मैं अपने ख्वाबों से ना करूं, उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में उड़ूं अपनी मर्जी के आसमां में उड़ूं। कहता है मुझसे हरदम ये मेरा जुनून,
is accompanied by her grandfather, who's also her guru and her mentor. Sayesha and her grandfather. Namaste. अपने मर्जी के आसमां